calculate net sensitivity and net specificity values, और those who among you जो कि इसको जल्दी से समझना चाह रहे हो या बाद में देखना चाह रहे हो, the lecture is already available on YouTube my channel कि how to calculate net sensitivity and specificity. Basically, the purpose of net sensitivity and specificity is that sometimes you have to perform sequential testing and on sometimes you have to do simultaneous testing. Sequential testing का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आपको एक टेस्ट के बाज़ औक़ात कुछ tests are pretty expensive, so you don't go straight away for sequencing. For example, in case of mutation detection, you always go for a preliminary screening. So जो preliminary screening होती है उसमें आप कहते हैं कि जी हम PCR करेंगे, RFLP करेंगे, आर्म्स टेस्ट करेंगे, एंड देन वी प्रोसीड फर्दर फॉर एन एडिशनल टेस्ट जो उसमें से हमें सस्पेक्टेड आएगा उसको हम सीक्वेंस पे लेके जाएंगे. सो एक लेयर बाय लेयर स्क्रीनिंग का टेस्ट है जिसको कहते हैं सीक्वेंशियल टेस्टिंग. सीक्वेंशियल टेस्टिंग में यू ऑलवेज गो फॉर ए लॉस इन नेट सेंसिटिविटी because you are taking positive samples and scrutinizing the most probable or relevant mutation among those. Let's say for example, if we talk about अगर मैं recent events की बात करूं, and if I am discussing, let's say एक मिनट मैं यहाँ से आपको इस एग्जांपल को ऐसे समझाता हूँ. जैसे देखें कि जो करंटली इस वक्त यूएस के अंदर सबसे कॉमन आई है म्यूटेशन फॉर कोविड which is more lethal, that is represented as E484K. Now, this non-synonymous mutation of E484K, अब इसकी identification जो है कि among how many patients this E484K conversion is present, it requires two steps. Number one, you go for screening of general population. In general population, आप general population के अंदर screen करेंगे कि जनाब इनमें से कोविड के पॉजिटिव सैंपल्स कौन से हैं. फिर इन कोविड पॉजिटिव सैंपल्स में से आप एक टूल और ऐड करेंगे कि जनाब अब हम इनमें से सीक्वेंस करते हैं वो लोग जिनके अंदर जो डिजीज की सिविरिटी है, सिविरिटी ऑफ द डिजीज वो हाई है. तो पहला टेस्ट आपका एक हो गया ये वाला जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग ऑफ जनरल पॉपुलेशन किया टू आइडेंटिफाई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स. देन फ्रॉम दोज पेशेंट्स you identify those individuals who are suffering from a quite serious ailment regarding respiration or any other associated ailments. And from that cohort of positive values, you perform a sequencing to identify how many of them are positive for E484K mutation. So this is sequential testing. Over here, you are dealing with loss in net sensitivity, but you are gaining in net specificity. You will be pretty much sure that the individuals exonerated from here are exonerated from here, free from E484K mutation से. जो पॉजिटिव है वो तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे सीक्वेंसिंग से, जो नहीं है वो आपको ट्रूली आइडेंटिफाई हो जाएंगे. सो स्पेसिफिसिटी आपके पास इंक्रीज करती है. इसकी ही एक काउंटर एग्जांपल आप देखें, साइमल्टेनियस टेस्टिंग. साइमल्टेनियस टेस्टिंग ये होती है कि if you came across a patient which is like suspected one individual, and this suspected individual has a swab sample. Now this swab is being sent at the same time to two different labs, let's say lab A and lab B, ya Agha Khan ya Shaukat Khanum. Now let's say in lab A the test performed is based on antibody antigen detection, and the second lab is dealing with a PCR based technique. ठीक है, PCR based technique के ऊपर वो काम कर रहे हैं. तो आपने दो टेस्ट एक ही स्वैब पे एट द सेम टाइम लगाए. So you are expecting a gain in net sensitivity while loss in net specificity. I'm going to elaborate this in two examples, and the more things will be more easily comprehended over here from your side. So let's proceed further. Let's say assume that we
that the corona prevalence in Rawalpindi is 5%. Now, based on antibody-based detection assay, let's say we are saying this as test A. Now we are talking about the sequential testing. Sequential testing के बारे में बात हो रही है. And for sequential testing, we are discussing that there is one event followed by another one. So there is a sequential testing example. Test A is being conducted for Rawalpindi और रावलपिंडी में 5% हम कह रहे हैं कि कोरोना की मौजूदगी है, प्रेवलेंस ऑफ 5%. अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि एक जनरल पॉपुलेशन में 10,000 इंडिविजुअल्स को हम स्क्रीन करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन एंटीबॉडी बेस्ड डिटेक्शन एसे टेस्ट ए इज स्क्रीनिंग ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स इज कंडक्टेड. नाउ the assessment of sensitivity and specificity for this test A is 80% and 70%. So 70% sensitivity है, 80% specificity है. अब हम इसके ऊपर जब बात करेंगे तो अब हम ये यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं आपने इनको देख के डरना नहीं है. सबसे पहले आप ये समझ लें कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 इंडिविजुअल्स में से कितने लोग होंगे जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हैं हमारे पास होने चाहिए. So 5% का मतलब है 5 into 10,000 divided by 100 giving us 500. So I assume that out of these 10,000 individuals, based on the prevalence value of 5%, I should be receiving 500 individuals positive for corona. Right? Now, based on the sensitivity 70%. Now 70% sensitivity hai, my test could identify 70 individuals out of 100, 70%. Now based on this 70% value, I want to calculate the true positives. True positives prevalence के अंदर 500, 70 into 500 divided by this. So that's the value I am going to get. This green value 350. These are the number of individuals which will be true positive identified rightly by my antibody based detection assay. 350. And the difference is 150 individuals which will remain declared negative by my test but they are actually positive based on the prevalence value. So ये टेबल मैंने आज आपसे रिवर्स ऑर्डर में बनवाया है. 500 prevalence के ऊपर 350 calculate हुआ, 70% sensitivity of the test into 500 divided by 100, 350. Similarly, out of those 10,000 individuals, 500 तो positive है, तो negative कितने हुए? 9,500. Now, in order to calculate how many will outrightly and truly be identified as negatives, true negatives, उसके लिए मैं करता हूँ 80% मेरे टेस्ट की एबिलिटी है स्क्रीनिंग के लिए और जो मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ है वो है 9500 divided by the percentage value. Why I am putting 9,500? Because I know that the prevalence of disease is 5%. So I already know that out of these 10,000 individuals, 500 would be declared positive for corona. So the remaining 9,500 will be declared as negatives. Multiplied by 80 divided by 100 is going to give us a value which says 7,600 individuals standing negative for this. And this number of individuals will be outright and truly identified as negatives. अच्छा, अब ये values जब मैंने identify कर ली 7,600, 350, ये वो लोग हैं जो straight away मुझे इस टेस्ट ने बता दिए कि ये नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव थे. अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं इस टेस्ट की फाइंडिंग को मजीद असर्टन करूं सीक्वेंशियल इवेंट्स में. तो मैं इस नंबर को, इनको याद रखिए, 350 प्लस 1900, इनको यानी जो कि मेरे टेस्ट ने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिए, ये मेरे टेस्ट की पॉजिटिविटी है ना, ये टेस्ट ने ट्रू पॉजिटिव्स डिक्लेयर किए हैं और ये लोग टेस्ट के मुताबिक एक्चुअली ये दे आर नेगेटिव but my test has wrongly identified them as positive, so I declare them as false positive. So let's assume we need a further assurance about COVID-19.
सो मैं अपने टेस्ट के डिक्लेयर्ड तमाम पॉजिटिव सैंपल्स को, whether they are true positive, whether they are false positive, I go for an additional screening via test B. So in continuation, I process those identified 2250 positive samples, which is basically the collection of 350 plus 1900 is equal to 2250 number of individuals. So I screened these individuals furthermore and were tested further by PCR-based COVID-19 detection. Now the sensitivity and specificity, both values based on PCR, I assume that they are 90% for each, 90% sensitivity and 90% specificity. तो अब मैं ये assume करता हूँ कि मेरा total cohort size 350 का था true positives, उसमें से कितने लोग ट्रूली आइडेंटिफाई होंगे पॉजिटिव में से 315. सो 315 इंडिविजुअल्स जो मेरे टेस्ट ए की स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आए थे वो टेस्ट बी में भी पॉजिटिव आ गए, ये वही ट्रू पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो गए. नेक्स्ट केस, आउट ऑफ दोज ट्रू पॉजिटिव्स व्हिच वर रॉन्गली आइडेंटिफाइड एज फॉल्स पॉजिटिव जो आइडेंटिफाई हुए थे, यहाँ पे अब हमने कहा कि ये वाले लोग 90 into 1900 divided by 100 is equal to 1710. Now they are negatives. They are true negatives. So इनकी subtraction के बाद मुझे ये value मिल जाती है, और इसी तरह से इसको subtract करूं इसमें से तो मुझे ये value मिल जाती है. ठीक है, अब आती है असल स्टोरी कि यहाँ तक तो आप जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पिछले लेक्चर में पढ़ाए हैं ये वही काम किया है हमने. थोड़ा सा डिफरेंट आपको इसलिए लग रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू एक नहीं है, डिफरेंट हो रही है, लेकिन वैसे हमारे कंटिन्यूएशन वही है. अगर मैंने स्पेसिफिसिटी निकालनी हो या सेंसिटिविटी निकालनी हो तो मैं ऐसे ही करूंगा. 350 डिवाइड बाई 500 is going to give me the sensitivity value. 7600 डिवाइड बाई 95 मुझे जो वैल्यूज देगी वो मेरे पास क्यूमुलेटिव स्पेसिफिसिटी की वैल्यूज आएंगी. अच्छा, अब नेट सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट होती है? नेट सेंसिटिविटी का मतलब है कि टेस्ट ए प्लस बी दोनों के बाद जो कंसेंसस बना पॉजिटिव सैंपल्स का, ट्रू पॉजिटिव्स का, ये वो नंबर है 315. ए और बी के दोनों के अंदर जो ट्रू पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुए, ए के बाद बी के अंदर भी 315 individuals. Out of the total value, 500 individuals which were based on the prevalence. This is the net sensitivity. So you can clearly see there is a decline of sensitivity value from 90% to 63%. Then there is a net specificity which increased this value. Now 7600 plus 1710. The true negatives identified in test A, the true negatives identified in test B. Summation of these two findings divided by 9500 is going to give us an increased specificity that these people don't have a disease, and we are certain about it to 98% based on these both tests. So this is called as sequential testing assessment for net specificity and sensitivity values. Both these tests are used on routine basis for different hospital-based screenings and assessments. For example, the doctor won't not advise the most expensive and rigorous test evaluation prior to a journal kind of test, and that journal test is basically including some number of people के ये लोग हो सकता है कि इनको diabetes हो. Let's say if we are screening an individual and we talk about कि जी हमारी population में diabetes है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? पेशेंट का ब्लड शुगर असेस कराते हैं. जब ब्लड शुगर असेस हो जाता है तो उसके बाद कुछ एडिशनल पैरामीटर्स के साथ आप उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं. तो इस तरह से जो आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं इसको आप कहते हैं टेस्ट ए, इसको कहते हैं बी. जो पेशेंट्स आपके पास ब्लड शुगर हाई वैल्यू में आते हैं, आप उन पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं एक एडिशनल नैरो टेस्टिंग के लिए कि यार इनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग and they are affected with diabetes. So the people who are exonerated in this step are more precisely decided. और इसमें sensitivity यानी आपको जो identify हो गया यहाँ पे diabetic है,
वो यहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि डायबिटिक है कि नहीं है। सिक्वेंशियल टेस्ट ये होता है। सो व्हाट इफ बोथ टेस्ट्स आर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, यानी हमने एक स्वैब लिया और स्वैब के दो हिस्से किए और दोनों को, एक को आगा खान एक को शौकत खान भेज दिया और दोनों टेस्ट साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए गए, तो उसमें हम नेट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे करते हैं? So let's assume that there is a population behind, and then we are conducting an assay, and this prevalence of this population for prevalence of a disease in this population is assumed in certain figures. और उसके बाद फिर हम इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि क्या इसमें जो डिजीज ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास वो कितनी सिविरिटी की आई है। तो ये हम चेक करना चाहेंगे कि साइमल्टेनियस जो स्क्रीनिंग हो रही है उसमें बीमारी हमारे पास किस नौइयत की और कितनी सीरियस आई हुई है। अब एग्जांपल में आपको थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, और एग्जांपल मैंने ये आपको देनी है कि एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ केस ऑफ जैसे कार्डियोवास्कुलर सीएनएस कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का एक केस है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की प्रेवलेंस हम कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन है जी 20% प्रेवलेंस में, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन वी आर डीलिंग for our study is 1000. So we are going for 1000 individuals. The disease prevalence in Islamabad is 20%, and 20% disease prevalence in 1000 individuals. We want to assess whether the test A कितने लोगों को identify rightly कर लेगा, test B में sensitivity क्या रहेगी। अच्छा, अब हमने कहा कितने लोग लिए टोटल? 1000 individuals. So out of these 1000 individuals, how many are identified as positive and how many stand identified as negatives? So true positives हम कैसे identify करेंगे? Same approach. 1000 में से कितने लोग हैं? Prevalence of disease है 20%. 1000 है मेरा study cohort. Divided by 100%. Percentage निकाल रहा हूँ. तो मुझे लगा कि 200 individuals will be positive. 200 individuals will be positive. The number 200 stands over here. The number 200 stands over here. They will be the number of individuals who actually are suffering from the disease in question based on the prevalence value of 20%. This 20% is the prevalence value. Now, the sensitivity of test A to truly declare positive among these 200 individuals is 160. How they calculated 160? It is simple. 80% is the sensitivity of truly identifying positive individuals. The total number of positive individuals are 200, which we assume, but the test capacity is to identify 80%. So this says 160. Over here, the sensitivity of test is 90%. So 90 multiplied by 200, the 200. So the test B could identify more individuals as positives. So 180 individuals are declared positive, 160 individuals are declared positive for test A, 180 by test B. Same story for specificity assessment. 480 individuals would be identified. Since we are multiplying 60 by 800 divided by 100%. Why 800? Because 200 are already declared positive. So the remaining of 1000 is 800. Similarly over here. So basically what I am doing right now over here in this slide is trying to make you understand the tables presented and then trying to make you understand more about the sensitivity and specificity based calculations of number of individuals truly stand positive against any disease. Now, once we have this table in hand, in order to calculate the net sensitivity and specificity assessment, what we are dealing, we say that 90% जो टेस्ट बी था उसमें स्पेसिफिसिटी भी 90% है और सेंसिटिविटी भी 90% है। ये आपने थोड़ा सा आसानी के लिए याद रखना है।
टेस्ट बी में सेंसिटिविटी भी 90% है, स्पेसिफिसिटी भी 90% है। टेस्ट ए के साथ हमने अब कुछ गेम करनी है। मैं ये करूंगा कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो दोनों टेस्ट्स में पॉजिटिव आ गए। 200 इंडिविजुअल्स इधर हैं, 200 इधर हैं। 180 का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई ओवरलैप होगा ना। जो आइडेंटिफाई हुआ है दोनों में पॉजिटिव, 160 और 180 के अंदर एक ओवरलैप है, मैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये देखें, ये वाले ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो टेस्ट ए ने भी पॉजिटिव कर दिए थे और टेस्ट बी से भी पॉजिटिव हो गए थे, ये है 144 जो बोथ टेस्ट्स ने डिक्लेयर किए कि पॉजिटिव हैं, दोनों का कंसेंसस है। ये 144 कैसे आया? सिंपल है, 90% of 160 which are truly positive for test A and 90% sensitivity threshold for test B. So 90% sensitivity of test B is tested on the number of values of test A 160. So 144 common in both, 144 common in both. So your unique patients identified by test A. इसने ने यूनिकली कितने लोग आइडेंटिफाई किए, वो डिफरेंस है। 160 माइनस 144 इज इक्वल टू 16। 16 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेस्ट ए ने यूनिकली आइडेंटिफाई किए कि ये पॉजिटिव हैं। ये टेस्ट बी के साथ नहीं हुए। टेस्ट बी ने 180 माइनस 144 में 36 इंडिविजुअल्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए जो यूनिक थे डी के साथ। यानी ओवरलैपिंग ए और बी के ये AB divided by 200. This is the net sensitivity value. Net sensitivity. ये net sensitivity value है कि अगर हम एक ही वक्त में सैंपल्स को दो डिफरेंट टेस्ट से एवेल्युएट करें तो हमारे पास हमेशा सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है। हम ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स को इंडक्ट करते हैं कि वो टेस्ट में हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। यानी एट ए टाइम अगर आप अपना सैंपल दो डिफरेंट लैब्स में भेजें और वो लैब्स उसको टेस्ट करें तो जो चांसेस हैं कि उनकी पॉजिटिविटी आएगी वो ये है कि any one of them could declare positive. That's why the net sensitivity value will always be on rise because you are screening it both and counting it both for A and B plus a consensus of A and B. Now for net specificity, the story is different. You are just talking about the true negatives. So the true negative value is being calculated by, again, the sensitive specificity value of test B, 90%, into the numbers truly declared negative in test A. So those are 480. So 480 into 90 is equal to 432, common in both. So the specificity calculation is 432 divided by 800. Those the total number of individuals disease free is equal to 54%. So this is how you calculate the net specificity calculation. और आप अब यहाँ पे नोट करेंगे कि जनाब अगर हम दो टेस्ट इकट्ठे कर परफॉर्म कर रहे थे ए बी और बी बी तो हमारे पास स्पेसिफिसिटी जो है वो काफ़ी हद तक मोर देन हाफ जो है वो डिक्लेयर हो गई कि नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि हम लोगों को छुड़ा नहीं सकेंगे बीमारी से कि आप बीमारी में का शिकार नहीं है। इसमें आपकी स्पेसिफिसिटी कंप्रोमाइज हो जाती है कि आप कितने श्योर हैं अपने रिजल्ट्स के बारे में। डिक्लेयर आप जो कर रहे होते हैं वो पॉजिटिव कर लेते हैं कि एनी ऑफ द टू सिग्नल्स कुड बी गेट एज पॉजिटिव। तो ये है नेट स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन। So once again, sequential testing, loss in net sensitivity, gain in net specificity. Simultaneous testing means gain in net sensitivity and loss in specificity value, which is drastically reduced in our last example. From 90%, the value has been reduced to 54%. Look over here. Specificity calculation for both A and B tests performed simultaneously reduced both. एक में 90% थी और एक में 60% थी तो उससे भी कम हो गई। ठीक है, so that is all from my side. Thank you very much for your attention and in case you have any doubts about कि आपको ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा या कुछ इशू है
तो one thing you can do, I'm going to paste the link over here as well. Just let me check it, link चलता भी है कि नहीं। हाँ, ये मेरा लेक्चर है, इसके ऊपर से आप यहाँ से भी इसको देख के समझ सकते हो कि कैलकुलेट करना हो कि कैलकुलेट नेट स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इसका मैंने लिंक भी दे दिया है, और आप लोग इसमें को जाके चेक कर लीजिएगा। और सीआर आप जरा देख लें कि